श्री आर के शर्मा जी से प्रार्थना करूंगा कि now I request Shri Rajesh Kumar ji, RPO. Celebrate this day, that is 29th of June, as Statistics Day, coinciding with the birth anniversary of Professor Mahalanobis, the Indian father of statistics, Professor Mahalanobis. He is widely recognized for his significant contribution to the field of statistics, particularly in India, including founding the Indian Statistical Institute. He was a pioneer in applied statistics method to real-world problems, especially in areas like large-scale sample surveys and economic planning. कृपया डायस पर आएं और अपने स्वागत भाषण से इस सत्र But before I took the welcome address, a few words about this contribution made by Professor late Prashant HOD, Department of Statistics in Jammu University, and I also welcome guest for the today program, Sri Rajesh Kumar, Professor PC Mahalanobis, on his contribution of the Indian statistical system as elaborated by the Sri Rajesh Kumar in his welcome address. But I also want to point out, during my probation period, and our senior officers have mentioned about the contribution of the Professor Mahalanobis. When India got independence, it partitioned into two nations, India and Pakistan, and during the partition, a lot of refugees played on the both sides, and government had a burden of settle the refugees, and India was not in a good position for the food grain to settle the refugees, and Professor Mahalanobis actually he used the salt statistics, consumption of salt, for the work out the consumption of the food grains to meet the requirements of the refugees during the partition day. Just I want to highlight the one of contribution of the Professor Mahalanobis. The Statistics Day celebration has become a legacy of Ministry of Statistics and Program Implementation since its first celebration in 2007, commemorating the birth anniversary of Professor Mahalanobis. The day is an opportunity to highlight the role of data and statistical analysis in shaping evidence-based governance and public policy in India. The National Sample Survey Office, now renamed as National Statistics Office, established in 1950, it has played a pivotal role in shaping the growth of country in 75 years journey. That is the organization, crucial institution for India's statistical system. He contributed to the formulation of India's 5-year plan, which emphasized industrial development. Assembled here to celebrate a very special occasion, Statistics Day. Yes, a day that is dedicated to the power of data, numbers and the science that help us make sense of our world. 19th Statistical Day we are today celebrating on the theme 75 years of NSS empowering India through data-driven decisions. Statistics Day is celebrated every year on 29th June in honor of birth anniversary of Professor Prasannata Chandra Mahalanobis, one of the greatest statisticians India has ever produced. He is known as the father of Indian statistics and the founder of National Sample Survey and Indian Statistical Institute. Today is not just a celebration of a subject, numbers and data. It is a tribute to the silent revolution that has shaped India's development journey for over 7 decades.
today I'll put little light on one of the most crucial pillars of India's statistical system, the National Sample Survey Office, commonly known as NSSO. जो लोग हमारे NSO-FOD से एसोसिएटेड है उनको तो सर्वेस का और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन जो स्कॉलर्स हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट फॉर स्टैटिस्टिक्स या स्टूडेंट्स हैं जम्मू यूनिवर्सिटी से, उनको सिर्फ पता रहता है NSSO ये क्या है, कहाँ से आया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. आई विल टेल यू वेरी इन ब्रीफ. So, established in the year 1950 by the legendary statistician Professor Mehel Nobis, the NSSO has played a significant role and a foundational role in shaping the country's data and landscape. It has borne with a vision to provide reliable and scientific data for policy making in independent India. The National Sample Survey is a crucial pillar of India's statistical system. In 2019, NSSO was restructured and merged under the National Statistical Office. जब मैं नई आई तो चिट्ठियों में कभी NSSO लिख रही हूँ, कभी NSO लिख रही हूँ. Then I try to learn यार ये NSO क्या है और ये NSSO क्या है. Please somebody make a difference to me because I am not aware. Then I was being told कि NSSO से 2019 में merge होकर एक नया यूनिट आया which is NSO. So, which is now functions under the Ministry of Statistics and Program Implementation, which is called MOSPI. Today, NSO. On the theme of the National Statistics Day, that is the 75 years of NSO. So I will not read it as a 75 years, but I will read it as Platinum Jubilee of NSO. And when we talk about Platinum Jubilee, if I associate it with the movies, so this is a day of celebrations. जब भी कोई फिल्म प्लेटिनम जुबली कर पाती थी पुराने जमाने में, आज के जमाने में तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मुमकिन ही नहीं है, तो एक उत्साह का माहौल होता था, एक माहौल होता था सेलिब्रेशंस का. Similarly, तो I see this as a day to celebrate the establishment of NSO is as Platinum Jubilee year. So we should call it as a Platinum Jubilee year rather than the 75 years of NSO. Now it has been a long journey. So 75 years, if I see the age of 75 years in age of a person, तो उसको हम बोलते हैं बूढ़ा हो गया है. पर लेकिन जब हम किसी इंस्टीट्यूट की या किसी कंट्री की एज 75 years बोलते हैं, it is in the infancy stage. It has not attained the even say कि younghood. There is a lot of way to go, lot of things to learn, lot of progress to made, and lot of fine tuning to be done what we are doing in all these years to achieve the targets, to achieve the marks that we can speak about, that we can hold for. Now as we say FOD, so FOD is Field Operation Division. तो ऑपरेशन का नाम तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से सुना कि ऑपरेशन सिंदूर. मुझे नहीं लगता कि एफओडी भी कुछ ऐसा काम करता होगा. नाउ व्हाट इज ऑपरेशन? व्हेन वी लर्न अबाउट ऑपरेशंस इन स्टैटिस्टिक्स, से पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सो वी हैव ऑपरेटर्स एंड द ऑपरेंड्स. एंड ऑपरेटर वर्क्स ऑन द ऑपरेंड्स. दे डू सम काइंड ऑफ कैलकुलेशंस, दे डू सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशंस. So if we remember from our learning days in the schools, so we used to compute C is equals to A plus B. Now plus is the operator here, equal to is also operator here. So that was the time we were used to compute the computations of the numbers using the pen and the pencil. But days are gone now. As the NSO-FOD has traveled this journey of 75 years, similarly the mode of computations, the mode of operations has also changed. ये जो स्टैटिस्टिक्स डे है, ये क्या कहते हैं, it is a notable contribution made by the Professor P.C. Mahalanobis. उनकी याद में ये मनाया जाता है. And he has given so many क्या कहते हैं, he is also known as the pioneer of us, father of statistics. नेशन के लिए, तो उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है. और ये जो डिपार्टमेंट जो हमारा नेशनल सैंपल सर्वे है, इट इज़ वन ऑफ द डिपार्टमेंट जो इन्होंने एस्टेब्लिश किया था 1950 में. एंड ही हैज़ ए वेरी बिग रोल टू प्ले इन द एस्टेब्लिशमेंट.
मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि ये हमारा रूल है क्या, नेशनल सैंपल सर्वे करता क्या है ना। ये नेशनल सैंपल सर्वे कंडक्ट नेशन वाइड लार्ज स्केल सैंपल सर्वे ऑन ए फेयरली रेगुलर बेसिस एंड द डाटा सो कलेक्टेड is used for planning purpose, and this data helps the government of India in taking informed decision about the you can say the latest position regarding poverty, employment, unemployment, and health, education, etc. So the data which we are generating is but now as you can say, India is a fastly developing economy, and our target is from lower middle income group to go to high middle class by 2047. So NSS has a very crucial role to play in providing the right data to the government of India, and it's a continuous process. In the older years, we used to release the report. It took some time 1 year, but now reports are regularly released, and for employment and unemployment, now it is a monthly report is released every month. So it's not to say कि भाई डाटा हम ये कभी सर्वे करते हैं या it is a continuous process on different. सवाल रहेगा कि हम लोगों को स्टैटिस के बारे में पता ही नहीं है, आसान शब्दों में क्या कहेंगे लोगों को? आसान शब्द देखिए, आज की डेट में जैसे बहुत सारे हमारे स्पीकर थे, उन्होंने या मैं थोड़ा सा अगर पीछे चला जाऊं तो वर्ल्ड में बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो एक इंडेक्स रिलीज करती है, चाहे वो हैप्पीनेस का इंडेक्स हो या कोई भी इंडेक्स हो। तो अब अगर दो तीन साल पीछे चला जाए तो उस वक्त आता है ये भारत का जो नंबर है वो 150वां है, 155वां है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि उस वक्त उसका डाटा नहीं हमारे पास था। नो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन स्पेशल इनिशिएटिव। अब इन चीज़ों के ऊपर भी सर्वे हो रहा है। जैसे अभी हमने पिछले 3-4 साल पहले एक सर्वे शुरू किया था, इसको हम कहते हैं टाइम यूटिलाइजेशन सर्वे। एक आम आदमी अपना टाइम डेली कैसे यूज़ करता है, तो मतलब वो काम कितने घंटे करता है, अपने लेजर में कितना टाइम यूज़ करता है, पढ़ने में कितना करता है, या अपनी फैमिली की टेक केयर के लिए कितना टाइम यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें पहले थी ही नहीं, तो उस वक्त वो उनका इंडेक्स आता था जी भारत बहुत पीछे है जी, ये तो उनका लेकिन आज की डेट में थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड वेरी रैपिडली। सो इस तरह के जो सर्वेज हैं, बाकी हम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर तो हम कर ही रहे हैं। अब इस तरह के भी जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे उसको भी हम टेकअप कर रहे हैं, और ये एक मतलब नेशन के लिए एक तो डाटा तो है ही है। लोगों को कम से कम पता चलता है कि आज हमारी इकोनॉमी है कहाँ। जैसे कहते हैं जी हम हमारी इकोनॉमी नो इट इज़ 4th इन द वर्ल्ड, मतलब GDP में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इट इज़ 4th इन द वर्ल्ड, इट इज़ ए 4 ट्रिलियन इकोनॉमी, और हमारा जो टारगेट है टॉप 3 में आना बाई 2030। और ये मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की हमारी GST कलेक्शन आ रही है तो ये हम इसमें पीछे रहेंगे।